वेलकम बैक टू कॉर्टेक्स। आज हम करने वाले हैं ऐप डेव डिप्लॉइंग द एप्लीकेशन इनटू कुबरनेट्स इंजन पाइथन। फर्स्ट क्लिक स्टार्ट लैब, देन हम इसे इनकॉग्निटो विंडो में ओपन करेंगे। क्लिक आई अंडरस्टैंड। उसके बाद आपके पास क्लाउड कंसोल का ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें आपको क्लिक करना है अग्री एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट यहाँ से ट्यूटोरियल को क्लोज करेंगे क्योंकि ये वैसे ही स्क्रीन खा रहा है एज ट्यूटोरियल हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे खुला हुआ है। सबसे पहले हम टास्क 1 पे जाएंगे जो कि है प्रिपेयर द क्विज एप्लीकेशन, जिसके लिए हमें क्लाउड शेल को ओपन करना है। तो हम इधर वापस आएंगे एंड इस पे क्लिक करके क्लाउड शेल को एक्टिवेट करेंगे। हम क्लाउड शेल को थोड़ा एक्सपैंड भी कर देंगे। क्लिक कंटिन्यू एंड देन क्लिक ऑथराइज। नेक्स्ट हमारे पास टर्मिनल ऐसे खुल जाएगा जिसमें हमें इन कमांड्स को सीक्वेंस में रन करना है। तो पहले हम यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल V एंड देन क्लिक एंटर। सेम तरीके से हम अगले जितने भी कमांड्स हैं उन सबको रन करेंगे सीक्वेंस वाइज। इस कमांड के कंप्लीट हो जाने के बाद हम नेक्स्ट कमांड रन करेंगे। देन नेक्स्ट हम डायरेक्टरी को चेंज करेंगे यूजिंग दिस कमांड एंड देन we will run this command to set the region, and lastly we will run this command to configure the quiz application. Now commands are long, so make sure you are not leaving the screen AFK, as it can result in Cloud Shell terminal closing on its own, and then you have to reconnect and there are lots of issues in it which may be caused. So wait patiently. इस कमांड के कंप्लीट हो जाने के बाद हम यहाँ वापस आएंगे एंड क्लिक चेक माय प्रोग्रेस एंड द असेसमेंट इज कंप्लीटेड। सो हम यहाँ आ जाएंगे नेक्स्ट टास्क, क्रिएट एंड कनेक्ट टू कुबरनेट्स इंजन क्लस्टर। इसके लिए हम यहाँ वापस आएंगे, इसको क्लिक करके मिनिमाइज करेंगे एंड देन सर्च करेंगे कुबरनेट्स इंजन। क्लिक ऑन इट एंड देन क्लिक clusters. Now click create cluster.
हमें यहाँ पे बोला गया है स्टैंडर्ड में क्लिक करने के लिए, तो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे, स्टैंडर्ड के साइड में ट्यूटोरियल को क्लोज करेंगे एंड देन दिए गए क्रेडेंशियल्स का यूज करेंगे। हम नेम में इसे एंटर करेंगे। For location, we have to select US East 1C, zonal, click zonal, US East 1C. Then next, we have to select allow full access to all cloud APIs. So first, go to default pool, security, and allow full access to all cloud APIs. Now click create. अब इसको बनने में भी एक अच्छा खासा टाइम लग सकता है, तो मेक श्योर यू आर नॉट लीविंग इट AFK। बीच बीच पे माउस मूव करते रहिए। This will take a lot of time, so wait for it patiently. क्लस्टर के सक्सेसफुली क्रिएट होने के बाद हमारे पास ऐसा आ जाएगा, तो हमें यहाँ वापस जाना है, क्लिक चेक माई प्रोग्रेस एंड देन इट इज कंप्लीटेड। अब हमें यहाँ वापस आना है, क्लिक ऑन बैक टू पेरेंट पेज एंड यहाँ से एक्शन से हमें सेलेक्ट करना है कनेक्ट, देन क्लिक रन इन क्लाउड शेल। Now in the Cloud Shell, after clicking Run in Cloud Shell, you have to click Enter. Next, run this command. And हमें यहाँ मिला है No resources found in default namespace. As said. Now, on to the next, create a Docker repository on artifact registry. So we will copy this command and run it here. After this, we'll come back here, click check my progress, and it is completed. Now, on to the next, we have to build Docker images using Cloud Build. So first, we will open our editor by clicking on it. उसके बाद हमारे पास ऐसा इंटरफेस खुलेगा VS कोड का, जिसमें हमें पहले तो वेट करना होगा इसके पूरी तरीके से लोड होने का। Wait for at least 2 minutes. नेक्स्ट हमें यहाँ से जेमिनी को बंद करना है, क्लिक ऑन ट्रेनिंग डेटा एनालिस्ट, कोर्सेज, डेवलपिंग एप्स, V1.2, Python, Kubernetes engine, देन क्लिक स्टार्ट। अब यहाँ पे हमें बैकएंड पे क्लिक करना है, एक्चुअली बैकएंड से पहले हम फ्रंट एंड पे क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन डॉकर फाइल। Now for front end, we have to copy this content and paste it here. Close front end, open backend, and click Docker file. Now we have to fill this content in backend Docker file. So paste it and click Ctrl S to save it. Now go back to terminal and run these commands. Now after this command is complete, click check my progress and it is completed.
Now on to the next, we have to create a Kubernetes deployment and service resources. So first we have to go to frontend deployment.yaml, click open editor, then click on frontend deployment.yaml. Now we have to replace the following placeholders using the values. First we will, our project ID is here, so we don't need to run this. For project ID, for bucket ID, we can run this. Open terminal. And this is my bucket. So I will copy it carefully. Then in the editor, I will replace this with my bucket name. My project ID is this, so copy this and paste it here by replacing it. Next, for front-end image identifier, it should be in the form of this. So copy this and paste it here. Now we will replace our project ID here. And then for region, it was US East 1C. So copy this and this command is complete. This whole file is complete actually now. Next, we will do the same with backend deployment YAML. Copy this bucket ID, go to backend, replace it. For cloud project, you have to enter project ID again. And for this, you have to enter this. For project ID, enter this. And then for region, we will enter US East 1. Okay. So coming back here, we will copy our location. Paste it here. Okay. My location is US East 1C, so it will be that. Now we have to save the files and then run these commands. Control S, open terminal, and then run these commands in sequence. Click check my progress. We have to wait for it. For region, enter US East 1. Here also remove C and enter US East 1. Control S and then open terminal. Next, run these commands.
Again, after these commands are complete, click check my progress. And then ये complete हो जाएगा and congratulations, the lab is complete. If you like this video, give it a like and subscribe to the channel for more such videos. Now you can just simply end this lab.